Hello students, this is the third video where we'll be continuing from where we had left. In the last video we had seen about the internal respiration, and in that we had studied about the transport of oxygen. Now in this video we are moving a little ahead, and now we'll be studying about the transport of carbon dioxide. Now this is very important, you have to pay attention because it is in a little detail. As you can see here, the transport of carbon dioxide takes place by three forms. Okay, first form is by plasma in solution form. Now it varies how much it is transported. This is just 7%. Like we had seen in oxygen also, 3% of oxygen was transported in the solution form. That means it dissolves in the plasma and then it gets transported directly. So here also, as you can see, there is the CO2 and water here which forms carbonic acid, and this carbonic acid further breaks down into H2O and CO2, and the CO2 is transported, okay, in that manner. Now second major chunk is by bicarbonate ions. About 70% of the carbon dioxide is transported as bicarbonate ions. Now how does this happen? We'll see here. Now this carbonic acid which is produced in the RBC, it is broken down as H plus ions and HCO3 ions. This HCO3 ions then goes diffuses into the plasma, which is the liquid portion of the blood, as you know, and there it joins with sodium or potassium, and then it forms sodium bicarbonate. Okay, and this is how the sodium bicarbonate is transported to the lungs, and from their lungs again it breaks down into NaCO3, and then again CO2 and water is formed, and this CO2 is expelled out by expiration. So just a quick revision. Second major chunk, 70%, is by bicarbonate ions. The carbonic acid breaks down into H plus and HCO3. This HCO3 diffuses into the plasma and forms bicarbonates. Third portion, a minimum amount of about 23%, is transported with the help of hemoglobin. Hemoglobin, sorry, hemoglobin reacts with CO2 and forms HbCO2. This is carb amino hemoglobin. It doesn't join to the heme group in the hemoglobin, but it joins to the amino group, and hence it is called as carb amino hemoglobin. So 23% is formed in this form. Okay, so these are the three ways in which carbon dioxide is transported. Now, if you are still confused, we'll move further and see the same thing in the diagrammatic form. Now, this is the same diagram as it is there in your textbook. It seems to be complicated, but once we study it, it becomes easy. So there's no need to panic. Now, as you can see, the first figure 8.8 shows oxygen pickup and carbon dioxide pickup at the tissue. Now, first of all, just correct this. This is oxygen release. Tissue में हम oxygen देते हैं और वहां से carbon dioxide लेते हैं. और next में फिर क्या होता है? ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द लंग्स. लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से आती है वो रिलीज हो जाती है एक्सेल होने को, और बाहर की एयर से हम ऑक्सीजन पिकअप करते हैं. तो यहाँ एक माइनर सा करेक्शन है. दिस शुड बी ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप at the tissue. So just correct this. Now, as you can see here, here in the left hand side they have shown the tissue cells. Here this is the blood, and in the blood this light pink color is the plasma, and this is, as you can see, this is the RBC. Okay. Now, as we can see here how things are being transported. From the blood, the oxygen is to be given to the tissue cells. As we have already studied how it is given,
It is given in the form of ऑक्सीहेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है, HbO2 बनाता है, और उसके बाद टिश्यूज में जब वो आता है तो वो वहाँ ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और 97% ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में चला जाता है। 3% हमने देखा था, ये पतले एरो से दिखाया जा रहा है, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और ऐसा का ऐसा वो पैसिवली डिफ्यूज हो जाता है इनटू दीज टिश्यू सेल्स। ये टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि वो मेटाबॉलिज्म कर सकें। तो जो HbO2 के रूप में ऑक्सीजन आया था वो ब्रेक डाउन होगा इनटू O2 एंड Hb, आपका जो हेमोग्लोबिन है वो फ्री हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में चला जाएगा। सो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि CO2 का क्या हो रहा है। अब ये CO2 को उनको पिक करना है। ओके, CO2 को पिक करके क्या करना है, हमको लंग्स तक ले जाना है जिससे कि वो एक्सपेल हो जाए। तो CO2 तीन टाइप में पिकअप होता है, जैसे हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा था। थोड़ा सा जो CO2 होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और वो CO2 डायरेक्टली चला जाता है। I'll just take a pen and show you. Here CO2 dissolves and it directly goes into the plasma. Then a little portion, how much it was? It was about 7% we had studied. Then we see that CO2 is also dissolved as carb amino hemoglobin. What it is? The hemoglobin which is freed up here, it joins with carbon dioxide and forms carb amino hemoglobin. 23% जो होता है that is by carb amino hemoglobin. So this becomes the 1, it is dissolved. This becomes the 2, which is carb amino hemoglobin, and the major chunk which I told you, that is about 97%, that is dissolved as bicarbonates. So as you can see here, we see twice that reaction, CO2 plus water, H2CO3, and here also we see the same reaction, the CO2 plus H2O, H2CO3. Here you can see it is written slow, right? This is the plasma portion. This is the plasma, as I told you. In plasma, when the carbon dioxide diffuses, it reacts with water, forms carbonic acid, it breaks down into bicarbonates and hydrogen. Now this is a slow process, but the same thing which when the CO2 enters the RBC, it becomes a fast process because of the enzyme present here, which is called as the carbonic anhydrase. Okay, this carbonic anhydrase is the enzyme which fastens the reaction because it acts as a catalyst. And as you can see, H2CO3 is formed, and this breaks down into bicarbonate and H plus ions. Okay, this HCO3 ions move out because they are in large number, and they move out, and in the same way as they have to balance this negative ion which is going out, the chloride ions come inside, and this is called as chloride shift. HCO3 comes out into the plasma. Here it will join with the sodium or potassium, and then it forms the bicarbonate. So as much ions which come out, same amount of negative ions come in to balance it. Okay, then what we see here is this H ion which is released, it joins with the hemoglobin to buffer the pH of the blood, because otherwise if H ions become very much, then if H ions increase in a large amount, then the acidity will be there and it will be going, the pH will go down. So to balance it, it forms reduced hemoglobin here. Okay, then what we see is, now this CO2 which is picked up by the tissue, it has to be taken to the lungs, and here in the lungs it has to be diffused out. The same process is in the reverse manner goes out here in the lungs. Now as you can see, this is the alveoli. यहाँ पे टिश्यू था, अभी हम lungs पे आ गए हैं, तो ये alveoli है और ये ऐसा कैसा ब्लड है, प्लाज्मा और आरबीसीज का। अभी alveoli में क्या करना है, CO2 को वापस देना है। तो जैसा डिसॉल्व होके आया था वो प्लाज्मा में, वैसा ही वो 7% डिसॉल्व होके alveoli में
चला जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% बना था, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 और H प्लस बन गया और ये CO2 23% यहाँ पे निकल गया। तीसरा जो मेन चंक था आपने देखा, स्लो प्रोसेस भी था और एक फास्ट प्रोसेस भी था। तो सेम वैसे ही होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस थे वो वापस H प्लस से जुड़ के सोडियम ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, ये ब्रेक डाउन होगा CO2 और वाटर में और CO2 बाहर जाएगा। पर जैसा आपने देखा ये स्लो प्रोसेस है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये प्रोसेस को RBC के अंदर फास्ट कर देगा और अगेन CO2 यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे थे रिएक्शंस फॉर्म हो रहे थे, वही वापस यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं, इसीलिए रिएक्शंस को इस टाइप से लिखा जाता है कि 2 वे प्रोसेस होता है। ओके तो यहाँ पे CO2 आपने देखा कि 3 प्रोसेस से बाहर चला जा रहा है। उसी तरह से हमको ऑक्सीजन अंदर लेना है जिससे कि ये लंग्स में ऑक्सीजन आ जाए। तो आपको मालूम है ऑलरेडी मेजर बड़ा एरो ये दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। जो हीमोग्लोबिन CO2 को लेके आया था, यहाँ से वो फ्री हो गया है हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और HbO2 बन जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये अंदर चला जाएगा। और थोड़ा सा अमाउंट जो है 3%, ये बारीक एरो से दिखा रहा है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हुए अंदर आ जाएगा प्लाज्मा में। तो ये 3% ही है, बाकी 97% जो है वो पूरा हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। ओके सो दिस वाज द सेम slides which we had seen here, and now we had seen them in diagrammatic form here. Okay, again if there is some confusion we can just see again in the next slide. This is a small revision: gaseous exchange at the respiring tissue and gaseous exchange at the lungs. Lungs बोला तो alveoli जहाँ पे gaseous exchange हो रहा है। टिश्यूज में जा रहा है तो टिश्यू में CO2 किस किस फॉर्म में जा रहा है? सेम डिसॉल्व CO2, HbCO2 अगेन बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में जा रहा है। और ऑक्सीजन जो है वो कैसे जा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाके ब्रेक हो जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सिमिलरली लंग्स में आ रहा है तो CO2 को बाहर किस फॉर्म में जा रहा है? जिस फॉर्म में बना था उस फॉर्म में ही चला गया। ये देखिए 7% जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन, यहाँ पे HbCO2 बना था वो यहाँ ब्रेक होके CO2 निकाल दे रहा है। यहाँ H2CO3 जो बना था वो वापस यहाँ H2CO3 70% जो है यहाँ पे CO2 के रूप में निकल जाएगा। और अगेन ऑक्सीजन को अंदर लेना है तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से यहाँ पे फ्री हुआ था उसके साथ जुड़ता है और HbO2 बनाता है और ये ऑक्सीजन अगर आगे जाके टिश्यूज में जाता है। So this is a small revision. If you can't understand from the first diagram, you can understand very well from this diagram. Study slowly, you will get to know how is the process. Next is regulation in breathing. As you know, brain is there which regulates all the major activities of our body. So here this is the diagram of the brain you can see, and this is the brain stem. In that the first portion is pons variculae जो हम बोलते हैं, और next is the medulla. So these are the basic breathing control centers. Now whenever there is increase in CO2, so there is a sensor in our brain. The nerve impulse from the oxygen sensors indicate that CO2 has increased and thereby oxygen has been decreased. And so these oxygen sensors जो होते हैं in arteries, they send a मैसेज, नर्व इम्पल्स से मैसेज जाता है और यहाँ से मैसेज जाता है वापस से कि भाई अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन ज्यादा लेना है। तो नर्व इम्पल्स ट्रिगर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। हमको मालूम है इंस्पिरेशन कैसे होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का काम होता है, उसमें डायफ्राम का काम होता है, उसमें स्टर्नम का काम होता है। तो ये डायरेक्शंस हमको तुरंत मिलते हैं जैसे ही समझ में आता है कि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है तो हमको इंस्पिरेशन करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन के लिए जो प्रोसेस होती है, डायफ्राम को फ्लैट करना, रिब्स को बाहर ले जाना, इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर होना, तो ये सब प्रोसेस चालू हो जाता है। So how it is controlled? By the pons and medulla. Now there are two terms more given in your text: pneumotaxic center and anoustic center. Pneumotaxic center is located in the area called as pons. This pneumotaxic center controls inspiration. It controls inspiration, controls inspiration
the amount of the air which is inspired, it is controlled by this pneumotaxic center, as well as REM sleep. This is rapid eye movement sleep, which is there in our body. It is a type of sleep which basically we say that the brain is active at that time. The neurons which are there, they are quite similarly active as we are in the waking time. Most of the vividly recalled dreams which we see, they are actually during this rapid eye movement sleep time. Actually the eyeballs move, it is said, and it is somehow, it allows the changing of scenes while we are dreaming, it is said. So there is rapid eye movement there in this type of sleep. And then there is the another type of sleep which is wave sleep, which is a deep sleep actually. That is also called as slow wave sleep. It is actually characterized by slow brain waves. Okay, so this pneumotaxic center which controls three things: inspiration, REM and rapid eye movement sleep, and wave sleep, is there located in the pons section here. Then second is anoustic center. This is just opposite to that of pneumotaxic central. It controls non-rapid eye movement and wakefulness. यहाँ sleep induce हो रहा था, तो यहाँ उसका opposite wakefulness को ये control करता है, और generally ये medulla के region में पाया जाता है. तो इसमें याद रखने वाली चीजें हैं कि pons and medulla are known as respiratory centers. दूसरा, there is a pneumotaxic center, and there is the second, there is the anoustic center is also there in our brain. Okay. Now, there is a small concept given in your text, Herring-Brewer reflex. Now, what they say is, first you should know what is tidal volume. The tidal volume is nothing but the amount of air which we normally breathe in and breathe out. Normally, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो नॉर्मल हो जाती है इनवॉलेंट्री रूप में, उसको हम बोलते हैं, जितना एयर हम करीब 500 ml लेते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. पर ये टाइडल वॉल्यूम जब लार्ज हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, 1 लीटर से ज्यादा हो जाता है, जनरली कब होता है, हम एक्सरसाइज या कोई फिजिकल स्ट्रेनियस काम करते हैं, तब हमको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा आती है. तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स को वो बड़ा करते हैं. तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं ये ज्यादा टाइडल वॉल्यूम की वजह से, और ये मैसेज डायरेक्टली हमारे नर्व्स को देता है. जनरली जो 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व है उसका, वो मैसेज लेके जाता है हमारे मेडुलरी सेंटर को, और उसको कहता है कि ये अब इंस्पिरेशन बंद करो. हमने देखा था लास्ट में यहाँ पे कि इंस्पिरेशन को ये जो है वो कंट्रोल होता है यहाँ पे ब्रेन से, राइट. तो हियर, as soon as the stretch receptors are stretched to a large amount by large tidal volume, the message goes via the nerves to the medullary center that you should stop inspiration. And this stop inspiration बोला तो नेगेटिव हो गया, स्टॉप करना है किसी चीज को. So ये negative feedback mechanism, it helps to cut the inspiration before the lungs are over inflated. Inflation का मतलब है ज्यादा फूल जाना, right? So ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करने का ये मैकेनिज्म है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. सो यू शुड नो, एमसीक्यूज में आया जा सकता है कि ये कब होता है. तो व्हेन द टाइडल वॉल्यूम इज लार्ज, then this occurs. What happens, there are stretch receptors are there, they send the message to the nerve, vagus nerve, and thereby the feedback mechanism helps to prevent the lungs from being ओवर इन्फ्लेटेड. ज्यादा फूलने से उनको रोका जा सकता है with the help of this herring brewer reflex. What a mechanism our body has. Great. Now, this is the chart which is there in your text. It shows the disorders, different disorders, their common symptoms, causes, and treatment. Not very difficult. Basically, some things you should know which are there in your text. So we'll just go through it fast. You can just revise it. Some things you'll have to mug up. There's no option. Like the first term is the emphysema. Emphysema means this is basically the tiny air sacs or the alveoli which are there, they become damaged. This is emphysema. Okay, so breakdown of alveoli, they say. Alveoli are nothing but the air sacs.
सो यदि एल्वियोलाई जहाँ एक्सचेंज हो रहा है एयर वही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमको ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। जनरली स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्मोकिंग के कारण से भी हो जाता है या पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, तो उसके समय में हमारे एल्वियोलाइज डैमेज हो जाते हैं। सो दैट इज द मेन कॉज। यू कैन गो सिंपली रीड द ट्रीटमेंट्स, दे आर easy. Chronic bronchitis, it's basically the tubes which carry the air to the lungs, they are damaged. So what happens? That causes chronic bronchitis. It takes a little time. This treatments which is there to क्योर इट टेक्स। क्रॉनिक बोला तो बहुत समय से जो चला आ रहा है, तो कॉफिंग से या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हो जाती है उसको थोड़ा लॉन्गर ट्रीटमेंट चाहिए ठीक करने के लिए। तीसरा है अक्यूट ब्रोंकाइटिस। दिस इज नथिंग, बस बेसिकली जो हो जाता है हमको चेस्ट कोल्ड जो हम बोलते हैं ना, वायरस और बैक्टीरिया से हो रहा है। देखिए, तो चेस्ट कोल्ड जो हमको हो जाती है या डिस्कम्फर्ट जो हमें चेस्ट में लगता है, तो वो हो गया अक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये नॉर्मली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। बैक्टीरिया यदि है तो हमको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, वायरस है तो हमको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, बाकी जनरल कफ मेडिसिन वगैरह या वेपोराइजर्स वगैरह लेके ये ठीक किया जा सकता है। देन यू हैव साइनसाइटिस। आइटिस बोला तो इन्फ्लेमेशन, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस हो जाना, इचिंग हो जाना या पेन होना, थोड़ा सा स्वेलिंग होना, इन सबको हम कहते हैं आइटिस, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हो गया है यदि साइनसिस में। साइनसिस में बोला तो जो पैसेजेस हैं हमारे वो नेजल कैविटी के अराउंड या नेजल पैसेज जो होते हैं वहाँ पे जो कैविटीज हैं वहाँ पे यदि इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। तो जनरली हम डीकंजेशन से यूज करके या वेपोराइजर से करके वो पाथ को हम क्लियर करते हैं। लैरिंजाइटिस, जैसा वो नाम ही बता रहा है, आइटिस एंड इन्फ्लेमेशन, लैरिंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, हियर इट्स रिटन द सेम थिंग। या वोकल कॉर्ड्स हो गए या हमारे गले में खरखराहट हो गई है, तो कई बार तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है या कई बार ओवर यूज करने से भी वॉइस वोकल कॉर्ड्स में तकलीफ हो जाती है। सो यदि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक से वो क्लियर हो जाएगा। निमोनिया जैसा बताया गया है, निमोनिया यानी हमारे एयर सैक्स जो है या तो वो कोई फ्लूइड से भर जाते हैं या फिर वहाँ पे पैची, यदि हम एक्सरे देखें तो वो पैची नजर आता है, दे आर फिल्ड विथ पस और द फ्लूइड, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, वी कैन वेरी क्लियरली सी दिस इन द एक्सरे। सो इट कैन बी माइल्ड, छोटा सा पैच है तो उसको हम माइल्ड बोलेंगे, यदि काफी सारा एरिया इन्फेक्ट हुआ है तो हम उसको सिवियर बोलेंगे। यदि बैक्टीरियल है तो उसको तुरंत एंटीबायोटिक से क्लियर किया जा सकता है, अदरवाइज रेस्ट के द्वारा लाइट फूड लेके धीरे धीरे उसको क्लियर किया जा सकता है। देन देर इज अस्थमा, एज यू नो अस्थमा बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है, जो डिजीज है जो बहुत आसानी से हम देखते हैं। जनरली difficulty in breathing that is associated with asthma because there is construction of the air passages, जो bronchioles हैं उसमें construction हो जाता है, उसमें mucus जमा हो जाता है तो वो lining thick हो जाती है, and there is periodic wheezing। wheezing का मतलब है एक whistling sound आती है या घरघराहट जिसको हम कहते हैं, वो अस्थमा में होता है। जनरली एक कुछ फूड्स की एलर्जी के द्वारा हो सकता है, किसी चीज की एलर्जी से हो सकता है, जैसे बारिश के पहले के समय में थोड़ा सा पोलन ग्रेन्स बहुत हो जाते हैं उससे होता है, या पेट के हेयर की वजह से भी हो जाता है, कोई पर्टिकुलर स्मेल से होता है, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से होता है। तो इस तरह से ये अस्थमा को हमको डिटेक्ट करना पड़ता है अपने को ट्रायल एंड एरर से कि हमको काय से ये एग्रावेट हो रहा है, एंड वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। इनहेलेंट्स यूज करते हैं जिससे कि ये जो जिसको कॉमनली हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर्स, जिससे ब्रोंक्यूल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं उनको वो डायलेट करे, तो इस इनहेलेंट्स लिया जाता है जिससे कि वो पैसेज को क्लियर किया जा सके। देन देयर आर सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, किसी ऑक्यूपेशन में आप हो वहां पे यदि आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है किसी पार्टिकल का, जैसे सिलिका का हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स का हो रहा है, सैंड के फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, ग्लास फैक्ट्री में, या एस्बेस्टोस से काम कर रहे हो तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, सिलिकोसिस हो जाएगा। दीज आर दी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी disorders which can be cleared by protective masks and gears. Okay, so this is about the disorders. Then there is the ventilator. This is nothing much to be explained to you. जो हम काम normally lungs करते हैं वो एक बाहर की मशीन करती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है और CO2 को बाहर फेंकती है। Then this is the very important part, which is pulmonary volumes and capacities. Now this is the tidal volume. It is the normal volume, which is about 500 ml.
Then there is inspiratory reserve volume. As the name suggests, inspiratory reserve बोला तो क्या, inspiration यानी taking inside, एयर अंदर लेना, रिजर्व बोला तो एक्स्ट्रा, तो नॉर्मल जो इंस्पिरेशन है उससे ज्यादा लेना यानी फोर्स्ड ब्रीदिंग करना, तो कितना हो जाता है, करीब वो 3 लीटर तक हम अंदर फोर्सफुली एयर अंदर ले सकते हैं। उसी का ऑपोजिट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, करीब हम 1000 ml से 1100 ml तक बाहर हम जोर से सांस लेके बाहर छोड़ा जा सकता है। जो हमारा पैसेज है नोज से लेके ब्रोंकियोल्स तक, वो पैसेज में जो एयर हमेशा भरी रहती है और निकलती नहीं है, उसको हम डेड स्पेस की एरिया बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम भी वही बता रहा है, डेड स्पेस के साथ साथ लंग्स में जितनी एयर है और जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी रहती है, यानी एयर हमेशा ही जो लंग्स में रहती है, उसको हम कहेंगे करीब 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम या आरवी। ये हो गए वॉल्यूम्स, उसी को जोड़ के बनती है लंग कैपेसिटीज। पहली है टोटल लंग कैपेसिटी, दूसरी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को आप सिंपल भाषा में देखिए, वाइटल बोला तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी और ईआरवी, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो करीब ये हो जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी 4600 ml तक आती है। और इसी में आप रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, जो थोड़ी बढ़ जाएगी, 5200 से लेके करीब 6 लीटर तक यानी 5800 ml तक ये पहुंच जाएगी। These are very important terms from your MCQ point of view. Please remember that, students. So here is the summary which all we had studied. Definition से लेके volumes and capacities तक. All parts are very important. 2 marks, 4 marks questions are there. Later when we'll be studying about the marks distribution and the weightage of the chapters, I'll be telling you about the questions which can be taken for 2 marks, 4 marks, etc. Okay. Thank you, students. God bless you.